Hi guys, welcome back to the channel. We're starting with benign odontogenic neoplasm of maxilla, the treatment plan. Okay. The resection principle require same as mandible. Resection principle require 1 to 1.5 centimeter bony margin, one uninvolved anatomical barrier around the bone and frozen section. The procedure is also termed as hemimaxillectomy or a partial maxillectomy, but most of the mucosa is preserved. In hemimaxillectomy or partial maxillectomy, mucosa is not preserved, but in this cases, during the treatment of benign odontogenic neoplasm, the resection we do, mucosa is preserved. As with mandibular resection, only mucosa that is directly infiltrated by the tumor is removed. So, the procedure is best termed as submucosal partial maxillary resection. Rather than calling it partial maxillectomy or hemimaxillectomy, we can call it submucosal partial maxillary resection. Okay, because only the infiltrated mucosa which is infiltrated by tumor is removed, not the whole of the mucosa. Okay. Most maxillary odontogenic neoplasm can be approached transorally. Transoral approach is there. The dissection plane may be subperiosteal or supraperiosteal depending on the CT scan evidence of tumor extension. We have seen in mandible also. It can be subperiosteal or supraperiosteal depending on the extension of the tumor. Now, the bony resection begin through a tooth socket. Obviously यहाँ भी tooth socket से start करेंगे, which allows 1 to 1.5 centimeter margin from the tooth socket from the adjacent tooth. We have seen that एकदम close resection नहीं रखना है. Same principle is followed in maxilla also. एकदम close resection नहीं रखना है. A general rule is either to remove or leave both the central incisors, otherwise prosthetic rehabilitation is compromised. Okay, in maxilla what we do, we either remove both of the central incisor or we leave the central incisor. नहीं तो फिर जो prosthetic rehabilitation होगा, क्योंकि prosthetic rehabilitation is very important in maxilla, we give splint and all, so it will be compromised. The resultant wound is closed primarily by reapproximating the labial and palatal flaps, which with a layered closure and is supported by a maxillary palatal splint. I told you, it's very important. So, the resultant wound is closed primarily by reapproximating the labial and palatal flap. पहले दोनों को reapproximate कर देंगे, palatal and labial flap जो कि रेस किया resection के लिए, with a layered closure and is supported by maxillary palatal splint. We give a splint. Okay. This is very important. Remember that. Okay, the general rule is either to remove or leave both the central incisor. Otherwise, prosthetic rehabilitation is compromised. This is rule in maxilla. Okay. This is one different thing. We have एक ये कि इंसाइजर रखना है या तो रिमूव करना है, और एक ये मैक्सिलरी पैलेटल स्प्लिंट. दिस 2 पॉइंट इफ़ यू आर बाकी सब मैंडिबल जैसा ही है, बट इफ़ यू आर मेंशनिंग अबाउट मैक्सिला ऑल्सो दस मेंशन दीज 2 पॉइंट इन एक्स्ट्रा. बाकी तुमको वही लिखना है कि रिसेक्शन क्लोज होना चाहिए, इतना 1 to 1.5 सेंटीमीटर का बोनी मार्जिन होना चाहिए, एक अनइन्वॉल्व एनाटॉमिकल बैरियर होना चाहिए, और एक टर्म लिखना है सब म्यूकोजल पार्शियल मैक्सिलरी रिसेक्शन, क्योंकि सारा म्यूकोजा रिमूव नहीं करते इसलिए ये टर्म है. Okay. After the soft tissue heals, an early bony reconstruction can be performed, most often about 3 months after resection, with reduced infection risk. Okay, early bony reconstruction can be performed. Okay, ये सब तो ट्रांसओरल अप्रोच है. एक ट्रांसक्यूटेनियस अप्रोच भी है विच इज़ नोन एज वेबर फर्ग्यूशन अप्रोच. It is less common but used when the tumor threatens extension into ethmoids, extend beyond the posterior wall of maxillary sinus into the pterygomaxillary space, or when it extends into the orbit. ये 3 कंडीशन है, या तो एथमोइड में गया है, या तो टेरिगोमैक्सिलरी स्पेस में गया है, या तो ऑर्बिट में गया है. देन वी यूज ट्रांसक्यूटेनियस अप्रोच विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेबर फर्ग्यूशन अप्रोच, वरना हम लोग ट्रांसओरल ही यूज़ करते हैं.
सेम इन मैंडिबल में भी ट्रांसओरल यूज़ करते हैं, वी गो फॉर पेरिफेरल रिसेक्शन, लेकिन कभी कभी ट्रांसक्यूटेनियस भी करते हैं जब सेंट्रल होता है, वी हैव सीन इन लास्ट क्लास होने की, जब सेंट्रल होता है तब करते हैं। तो सेम इन मैक्सिला, ये तीनों कंडीशन होंगे तब हम लोग ट्रांसक्यूटेनियस और वेब ऑफ फ्यूजन यूज़ करेंगे। ओके, so with this we have ended with the treatment and management of odontogenic tumor, and we have ended the odontogenic tumor topic. For next videos, like, share, subscribe and comment. Bye.